Hello and assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome back to another exciting episode of the Swanky Doctors podcast. This is your host, Ali Heather, and today we have a very special guest with us, Dr. Shayan Marsia, who has recently matched in the neurology program at Michigan State University. Along with that, he has got a really strong research portfolio. And Dr. Shayan, welcome to the show, and thank you so much for joining us today. It's really an honor to have you on the show. Thank you very much, Ali, and the honor is absolutely mine. Just to correct you a bit, I didn't match into Michigan State University specifically. It's a program Mhm. affiliated with Michigan State. It's the Okay. program is Spectrum Health, Michigan State University. Sorry for that, but Okay. essentially it's affiliated. So thank you very much again, Okay. and I am really excited to answer your questions and to be helpful to as many people as possible. Okay, thank you so much. So, Dr. Shayan, we'll start with some basic questions like where were you born? How was your early life like? And where did you get your early education from? Acha. So I come from a very mixed background in the sense that I wouldn't say that I was born with poverty or something, but I come from a middle class background, and Hmm. my parents did everything possible to meet their ends. There was a good time I saw when I was growing up in terms of money, and then there was a bad time I saw in terms of money as well. Okay. Because of the fact that my father is a businessman, he's self-made, he has had to work day and night to make ends meet. My mother's a housewife, so very very poor family structure in the sense. But what my parents essentially did throughout not just my childhood but also my siblings' childhood as well, that they put us through an exceptional education system. So Okay. अगर घर में खाना नहीं होता था that would be fine, but education system पक्की होनी चाहिए थी. ठीक है, तो my Yeah. father never backed out from paying the fee of an exceptionally expensive school. So my entire education from kindergarten to A levels is from Beacon school system. Hmm. Similarly for my siblings as well. So Beacon is not a small name; it's a big name in the entire world essentially. And Yeah. I am very grateful to not just my parents but also the teachers that I got throughout my entire life. And yeah, so that's me. Hmm. And you mentioned that you are a graduate of Dow, right? Yeah, So I yeah. would like to know, okay, how was the life like at Dow back in your days? Yeah, I will be honest. So, Dow was the people for me. I just Hmm. absolutely loved the It's people always there the people जहाँ because पे भी चले जाएं it's अगर always the people. लोग अच्छे नहीं हैं तो obviously जो मर्जी Yeah, institution कर ले yeah. you won't be able Be- to enjoy or yeah, because OA levels में तो वही था ना कि यार we have to get into either AKU or Dow if you're in Karachi, जैसे लाहौर में किंग एडवर्ड होता है इस तरीके से. hmm. तो सबके अपने अपने सिटी के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो हम getting into Dow was like a dream come true of sorts. कि हाँ चलो गुड Yeah. सीन हो गया, one of the best programs in the country, ये वो. But essentially the university does not help you in your journey per se, if you're a Hmm. medical student. मेरा ये मानना है. Yeah. And Yeah. I'm not shameful about it. I'm not shameful in agreeing with the fact that मुझे कोई खास जो मेरी यूनिवर्सिटी से इतनी खास कोई मदद नहीं मिली जर्नी में. But the people, so I have had amazing friends. My clinical group, they helped me throughout. मतलब अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ लाइब्रेरी में तो वो मेरी proxies लगा रहे हैं, Yeah. and then I met my wife there. So I think Yeah. that was a success for me. You know, Yeah. finding love in the university is important, I guess. Hmm. Okay, so that's cool. So I would like to know, okay, what inspired you to pursue a career in medicine? Like, what's the story behind it? Nothing. I never wanted to be a doctor. I Okay, never then wanted to how be a did you end doctor. up Yeah. in a med school? Yeah. So that's a good story. So there are two reasons about it. I was always interested in science, right? So Hmm. because I've been a public speaker and I've known enough about history and world affairs, like I had A stars in O level, A level history and stuff. So I wanted to go Hmm. into law or world affairs or international relations of sorts. मेरा interest of reading भी वही है. But there were two reasons. एक तो ये कि बचपन से like my father wanted me to be a doctor. He never forced us. He always wanted me to be a doctor. Very cliche story. So I Hmm. thought, yeah, why not? Let's just try pre-med. When I decided to study pre-med, उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यार I'm really good at it. I am good at physics, chemistry, biology more so than the other subjects. So I decided to perhaps give it a go. Dow and AKU. And when I got into med school, it kind of became a part of my instinct, a part of my personality. कुछ हद Hmm. तक शायद मैंने मेडिसिन इसलिए भी लिया बिकॉज दैट वाज ओनली द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग दैट कुड कम अक्रॉस टू मी ड्यूरिंग माय इनिशियल अर्ली स्टडी इयर्स. बाकी सारी चीजों में मुझे Hmm. मसला नहीं होता था. मुझे मसला होता था कि यार अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो इतने साल पढ़ना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर वट एवर कम्स विद इट, द टॉक्सिसिटी एंड द वर्क
stress and the patient dealing Yeah. and all that stuff. तो मैं सोचा यार Mm-hmm. यही एक वो चीज है जो कि मुझे चैलेंज दे रही है. तो आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स इन डूइंग थिंग्स व्हिच आर चैलेंजिंग rather than which come Mm-hmm. easy to you. तो इंटरनेशनल रिलेशंस तो मैं अभी भी पढ़ लेता हूँ, अभी भी उस पर तो अच्छी खासी काम कर लेता हूँ. बट आई थिंक इट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग टू मी, तो इसलिए चूज किया. या अभी तक जैन मैंने जितने भी इंटरव्यूज किए हैं एंड ऑलमोस्ट सबका यही आंसर था कि दे वांटेड टू डू द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग जो कि अवेलेबल थी. सो मेरा ख्याल है सारे पाकिस्तानी जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो इसी थॉट के साथ चलते आ रहे हैं. आई गेस बाद में जाके सो पता चलता है कि कितना चैलेंजिंग था. जब आपको जॉब्स या. नहीं मिल रही होती है मुल्क में, 50,000 की नौकरी कर रहे होते हो, तो फिर पता चलता है. So Dr. Shan, what are some of the extracurricular activities that you were involved in during your undergrad days? यार मेरा एक मसला था, आई वांटेड टू डू एवरीथिंग. सो वेरी अर्ली ऑन आई डिसाइडेड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू कम फर्स्ट इन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. इट्स इम्पोर्टेंट Mm-hmm. टू कम सेकंड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. तो Yeah. आई एम नॉट अ विनर एट लेट्स से वन थिंग इन लाइफ. आई Mm-hmm. जस्ट लाइक टू रन द मैराथन ऑफ लाइफ. तो मैं 6-8 Okay. चीजें एक साथ उठाऊंगा और उन सब में जो है, भले से आई एम नॉट द एक्सपर्ट, भले से आई एम जस्ट कमिंग सेकंड इन दोस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. तो मेरी ये फिलोसफी है कि आई हैव जस्ट मास्टर्ड द आर्ट ऑफ कमिंग सेकंड. सो आई डोंट बिलीव इन Mm-hmm. कमिंग फर्स्ट. मेरा वो है ही नहीं Okay. सीन. ठीक है. तो Mm-hmm. मैं सब कुछ करता था बचपन से, सिवाय फुटबॉल खेलने के या गिफ्ट सेलेक्ट करने के लोगों के. आई थिंक आई एम गुड एट एवरीथिंग. ये थोड़ा Okay. नार्सिसिस्टिक कॉम्प्लेक्स भी है मुझे. But I have played good level cricket as well all my life. I have read everything from philosophy to literature to history to science to sports to everything. And then Mm-hmm. I've played badminton. I've been part of the swimming team. Most people don't know, but I was a black belt in Taekwondo till I was at age Okay. 16. Yeah, that's very funny because even I don't remember a lot of it now. तो हर Mm-hmm. चीज इस्लामिक एजुकेशन, आई थॉट दैट नहीं यार मुझे इस्लाम पढ़ना है, सही तरह समझना है, तो वो भी मैंने पूरा किया है. बट देयर इज वन Okay. थिंग विच आई थिंक जो मेरी पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरह डिफाइन करता है और जो मुझे जिंदगी में आगे जिसने मदद भी बहुत की है, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग फॉर श्योर. Yeah. उसके लिए मेरे पास एक प्री रिक्विजिट था, द कॉन्फिडेंस दैट इट रिक्वायर्स and the knowledge that it requires. So public speaking has to be my major extracurricular, co-curricular activity that I chose and that I mastered in जितना हो सका. मुझसे भी बहुत बेहतर बेहतर मुल्क में यार डिबेटर्स हैं और Mm-hmm. मैं बड़ा एनवी भी करता हूँ उनको कैसे वो कर लेते हैं. बट मेड स्कूल Yeah. के साथ इतना ही हो सकता. So, but in fact, I turned it into a profession. So even right now, I am a public speaking coach at the city school, and I've been debate coaching since 2015, since I graduated A levels. तो मैंने उसे पैसा भी बनाया, Okay. ऐसी बात नहीं. Okay. ओके दैट्स वेरी इंप्रेसिव. बल्कि आई थिंक दैट्स द बेस्ट अप्रोच, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जो मेड स्कूल होता है उसका अपना ही इतना प्रेशर होता है स्टडीज़ का, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन यहाँ पे भी मैं देखता हूँ कि दे आर प्राइमरीली फोकसिंग ओनली ऑन द स्टडीज़, और वो बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स वाली तरफ उनकी साइड वो लैग कर रही होती है. और पता है मेरा बहुत नहीं ख्याल गलत कि है. वो इस हाँ मॉडर्न एज में वो बिल्कुल भी तो राइट अप्रोच नहीं है. इवन नहीं चल हेल्थ वाइज भी सकता, बिल्कुल नहीं ठीक चल नहीं है. सकता. अब एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं है. हेल्थ वाइज देखो, हेल्थ वाइज तो चलो ठीक है, हम लोग पाकिस्तान में ना, और स्पेशली जो मेड स्टूडेंट्स होते हैं, हमारा ना दिमाग डिफरेंट होता है. हमारा एक स्क्रू अजीब सा होता है, ढीला होता है. सही है. हम लोग की अंडरस्टैंडिंग ये है कि लाइफ विल पुट अस थ्रू सो मच टॉक्सिसिटी and we'll have to endure it because we are med students, because that is the dilemma and that is या. the perspective that has been created around med students, right? but हम्म. but they don't understand कि now आगे जाके जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है ना, nobody will give a हम्म. shit कि अगर आपको डॉक्टरी पक्की आती है, आपको पेशेंट डीलिंग अच्छी आती है, आपको पैथोलॉजी डायग्नोज करना अच्छी आती है. people will या. care if you have meta skills. So it's हम्म. important to get meta skills. So just a little bit of definition of meta skills. Meta skills basically वो होती हैं जो कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स को कंबाइन करके एक ऐसी स्किल बनती है कि अगर आपने वो एक्वायर कर ली तो आपकी बहुत डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्ट स्किल्स के भी जो है ब्रांचेस खुलना शुरू हो जाते हैं. तो मेरे हम्म. हिसाब से मेडिकल स्टूडेंट्स में बहुत लैक करते हैं यार. मैंने अपने पेयर्स को, अपने कॉलीग्स को बहुत दफा, बहुत सालों में देखा है कि काफी चीजें वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग या कोऑग्निटिव स्किल्स. वो नहीं कर पा रहे होते हम्म. क्योंकि उनकी एक मेटा स्किल नहीं डेवलप हुई हुई थी. उनका वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार टू टू डाइव इनटू द अननोन है ना, वो तभी आप कर हम्म. सकते हो जब आपकी मेटा स्किल्स डेवलप होती हैं. उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. सही. एंड डॉक्टर शैन, आई वुड लाइक टू नो कि हाउ डिड यू गेट इनटू द पब्लिक स्पीकिंग, और ये सारा जो आपका कह लेंगे स्ट्रेंथ्स हैं ये कैसे डेवलप हुई? So since I was a child, I was a very confident बच्चा, but I was also a very annoying बच्चा. सही है. मेरे दोस्त वगैरह जो ओके. बचपन के वो आज तक मुझे बोलते हैं यार तू बहुत annoying है, बहुत lame था ये वो. But that annoyance, I used that. So I was bullied through and throughout. I was when I was a child, when I was in my early schools या middle school में जब था,
तो बुलिंग जो है वो एक तरीके से एक्सप्रेशनिज्म बन के निकलती थी जब मुझे गुस्सा आता था. आई यूज्ड टू हैव हम्म एंगर इश्यूज एंड स्टफ. बट बिकॉज ऑफ द हम्म कॉन्फिडेंस दैट आई हैड एंड ऑब्वियसली आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, आई यूज्ड टू रीड अ लॉट. बहुत रीडिंग यार, या मतलब हर हफ्ते माय फादर यूज्ड टू ब्रिंग मी अ बुक एंड हर हफ्ते आई हम्म यूज्ड टू फिनिश अ बुक. दैट वाज अ डील. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द ओके रीडिंग एंड द नॉलेज एंड द कॉन्फिडेंस एंड देन सो मच एंगर एंड सो मच एंग्स्ट इन मी व्हिच बॉइल्ड डाउन टू एक्सप्रेशनिज्म. इन क्लास 11 आई थिंक मेरे स्कूल के हेडमास्टर ने किसी मॉडल यूएन के लिए जो है टीम्स बनाई थी एंड ही डिडंट चूज मी. सो बिकॉज हम्म आई डोंट कम फ्रॉम एन एक्सेप्शनली एजुकेटेड बैकग्राउंड, तो मेरे घर में या मेरे या इतराफ में अंग्रेजी का जो है इतना इस्तेमाल नहीं था और वो इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग कॉम्पिटिशन था. तो ही डिडंट चूज मी हम्म बिकॉज आई कुडंट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश इन क्लास 11. आई एम टॉकिंग अबाउट ओके 2012 की बात है. तो ओके मैंने बोला यार ये क्या बात है सर, आई एम वेरी गुड विद मॉडल यूएन. जिन बच्चों को आपने भेजा है उनको तो उन कंट्रीज के बारे में कुछ पता नहीं और मुझे तो सारी कंट्री के फ्लैग्स कैपिटल सब रटे हुए हैं. ही टोल्ड मी हम्म बेटा तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है. मेरी ओके हट गई. मैंने उसके बाद से इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया. उसके बाद से आई जस्ट हम्म यूज्ड टू वॉच शोज एंड मूवीज एंड लिसन टू सॉन्ग्स इन इंग्लिश एंड आई डेवलप्ड माय वोकैबुलरी. आई यूज्ड टू लिटरली ओपन द डिक्शनरी एंड रीड इट. तो जब हम्म इंग्लिश डेवलप की और फिर वो सारी चीजें जो बॉयल डाउन हो रही थी इन ए लेवल्स, आई डिसाइडेड टू परस्यू पब्लिक स्पीकिंग. कुछ अच्छे लोग मुझे मिल गए. आई डेंट हैव अ प्रॉपर कोच ओके इन माय स्कूल. कुछ अच्छे मेंटोर्स अच्छे कोचेस मिल गए, बहुत है. नाम लूंगा तो हम्म बहुत टाइम हो जाएगा बट या उनके उनके पीछे पीछे बैठे बैठे उनसे सीखते सीखते सिखाते थोड़ा जुगाड़ मार के थोड़ा मैनिपुलेशन से कुछ करके बस सीख लिया जो सीख लिया. रोड लर्निंग बहुत थी. हम्म यूट्यूब वीडियोस हेल्प, खान अकेडमी हेल्प, रीडिंग हेल्प, सो मेनी थिंग्स. या Okay, that's impressive. So, Dr. Shayan, now I would like to come to the USMLE wala part. So, I would like to know when and why did you decide to go for the USMLE? Like, was it during the med school, या फिर after graduation आपने decide किया कि you will be going for the MLE? No, before even starting med school, I knew that this is the path. Majorly because I Okay, had grown up listening to stories from my nani about one of my mother's cousin who was an emergency medicine professor at Aachen at that time. Now he's at Cornell, okay, Hopkins में भी रह चुके हैं. बड़े इंस्पायरिंग डॉक्टर जुनेद रजाक. तो yeah, वो रिश्ते में मेरे मतलब अंकल लगते हैं, तो उनकी स्टोरी सुन सुन के बड़ा हुआ था. तो आई न्यू के यार अगर मेडिसिन करनी है तो फिर यही जो है पाथ है कि भाई अमेरिका जाना है. The other thing सही. why I realized that I have to pursue the American route is because of the fact that research पे सबसे ज़्यादा focus जो है वो US में है. So very हम्म early on I decided कि यार I want to pursue research, maybe not clinicals at that point. So because of that I decided to pursue USMLE, and then I had a friend, हम्म we decided to study together, and then एक से भले दो, and then मेरे seniors अच्छे मिल गए जो मेरे mentor है डॉक्टर शाहजेब खान, जिनसे मैं फर्स्ट ईयर में मिला था, yeah, वो उस वक्त फिफ्थ ईयर में थे, जिन्होंने रिसर्च काउंसिल ऑफ पाकिस्तान भी स्टार्ट किया है. तो वो yeah, खुद जो है उस वक्त यूएसएमएलई दे चुके थे, एंड देन उनकी मेंटोरशिप और उनकी काउंसलिंग के बाद द पाथवे वाज प्रीटी क्लियर. पढ़ाई वाज okay, वेरी that's वेरी cool. डिफिकल्ट. यूएसएमएलई की पढ़ाई बहुत हम्म मुश्किल है. लाइक इट्स वेरी इजी टू yeah, pursue the route, it's very easy to decide it, or it's it's overwhelming, it's exciting to just pursue a route which will be productive to you, or the outcome will be amazing, but the studying aspect is very hard. So there were times when I हम्म used to break down and I was like बस नहीं हो रहा मुझसे. सैटरडे नाइट yeah, को रात में 11 बजे लाइब्रेरी से मैं और एक मेरा दोस्त जा रहे हैं करीम करके घर, जबकि सैटरडे नाइट को लोग क्रिकेट खेल रहे होते थे, हमारे जो दोस्त थे. हम्म तो बड़ा मुश्किल होता था यार. इट्स वेरी हार्ड. सही. So, can you please briefly explain how was the experience of appearing in steps? At that time, you were obviously enrolled as a full-time student at Dow. तो वो सारा experience कैसे था and how were you It managing was it really all? hard. It was really hard. It was really hard in the sense that I'll tell you two things. एक तो logistically it was very hard because Hmm. Dow, I had to work on multiple research projects, and then I was also Hmm. working as a professional teacher at Beacon House at that time. तो वो सारा Okay. एक साथ मैनेज करना जिसमें I needed the people around me, my friends, my fiance, everyone. अब if my clinical group was not supportive तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता था ना, because उनकी बदौलत जो है वो फोन करते थे, चलो आ जाओ क्लास शुरू हो रही है, भाग के आ जाओ, लाइब्रेरी से भाग के चले Hmm. आते थे, बट पूरे दिन पढ़ रहे होते थे. Logistically it was Hmm. very hard, but I think more than logistically it was harder emotionally. So I Hmm. like to put it in just like one phrase. Step one took a part of my personality, and step two took a part of my sanity. But if I had Okay. to do it all over again, I will do it. I will still do it because Hmm. I think it's some sort of addiction to come up to this level and to match, and then that adrenaline rush. और जो वो इतने 7-8 साल की जो मेहनत है वो कल्मिनेशन पे जब पहुंचती है, उसका एक अलग ही मजा है. और Hmm. आई होप कि रिवॉर्डिंग भी हो. अभी तो पता भी नहीं, हमें आधी ज्यादा जिंदगी पड़ी है मेडिसिन की. तो इट वाज वेरी Yeah, हार्ड. inshallah, inshallah. बट यार academically speaking, I say this Ali, हर मेड स्कूल को इस मुल्क में फर्स्ट एड और यू वर्ल्ड को अपने करिकुलम में इनकलकेट कर लेना चाहिए.
मेरे हिसाब से, या क्योंकि जो भी वो सही कर रहे हैं इट्स नॉट वर्किंग। जो भी मेड स्कूल सही कर रही है अपने करिकुलम के साथ, इट्स नॉट वर्किंग। यू कैन कोट मी ऑन इट, यू माइट एज वेल नॉट एडिट दिस, मुझे नहीं फर्क पड़ता मेडिकल स्कूल मेरे खिलाफ सूट कर दे इस बात पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि या वो अच्छे डॉक्टर्स बना रहे, मुझे नहीं लगता। एज तो उनको ये एग्जैक्टली यूवर्ड जो है ऐसे ना ही इनकलकेट कर देना चाहिए। सही okay so can you please share ke did you go for any electives या observerships to the US and if yes then what was your approach to finding that right electives for you. Yes, I did. In fact, I did go after graduation. I went for two observerships, and the process is pretty simple. What the others would also tell you is that you have to email a proper load of doctors in the United States to secure free observerships or free electives. But if one has money, and why shouldn't they spend the education? So they might as well should email the big programs like Harvard, Yale, Cornell, and it might cost you $4,000, $5,000, but it's worth it. I mean, those are amazing institutes. You'll learn a lot. You'll make great contacts, and you'll be able to secure residency spots as well or fellowship spots as well in those programs. But मेरे पास पैसे नहीं थे भाई, so I did not have the luxury. So I emailed a lot of doctors, and I found two out of those. One of them was also a Dow alumnus. So, but I went there, and in fact, like इतने पैसे भी नहीं थे कि I could stay at hotels or Airbnb and stuff. So naturally, in Indiana, when I went for the observership at Indiana University, I found a Dow alumnus. The doctor was hired there. So उन्होंने अपने घर पे मुझे रख लिया, and he used to do so much for me. And now his family is just like my family away from home. And additionally, when I went to Phoenix to work under a neurologist, he just loved my CV and he just interacted with me a few times over the phone, and he just kept me at his place. So मैं उनके घर पे ही रहा पूरा महीना, and I developed okay an extremely amazing bond with him and his entire family. Like I'm teaching debate to his children now online. okay So okay that's so cute. yeah, वो ये once you set foot out of your home ना, things work out and हो जाता है कुछ ना कुछ यार. And how did you go about building a strong CV and what advice would you like to give to the students who are looking to strengthen their CV. One thing is understood, and we all know this, which is grade scores. If you don't have great scores, if you don't have a great CGPA, your CV is of no use because nobody will have a look at it because you will be filtered out, right? But once you have great scores, once you have a decent GPA, I'm not talking about 4.0 GPA, or I'm not talking about 270s. I'm talking about I had 240s, man. So I'm talking about Yeah. 240s, or I'm talking about a 3.2 की GPA जो मेरी थी, सही है. Very average, like normal. पाकिस्तान के स्टैंडर्ड हिसाब से इस वक्त below average चल रहा है बल्कि सब 270 मार्क है. Yeah. ठीक है, तो उसके बाद there are three things that you need to do. One is research productivity. So you should have research publications that will help you in CV like anything. I'm not kidding. There will be professors who will be coming out at you and they will want to work with you, right? And then you should know how to handle that. The other thing is Yeah. having a core curricular aspect. So my entire CV boasts about public speaking, like everywhere. All my interviews during the residency match season were all about public speaking. सही है. किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा कि आपके 240 क्यों आए और आपके 240 260s क्यों नहीं आए. किसी ने नहीं पूछा मुझसे. मतलब great scores. Tell me more about what you did with public speaking. And the third thing Yeah. is your volunteer activities, or the personality that is ensured in your CV. सही है. तो शायद अगर आप volunteer activities कर रहे होगे तो वो आपकी CV से पता चल जाएगा. अगर आप sports में होगे वो आपकी CV से पता चल जाएगा. तो ये तीन चीजें बड़ी सही इंपॉर्टेंट है. Sahi, that's cool. So, Dr. Shayan, as you have been serving as an active member as well as a mentee at Research Council of Pakistan. So, for our audience, can you please tell what's the exact role of this council and how was your overall experience of working there? I'll start with the experience. Research Council of Pakistan, RCOP, has been the best thing that has happened to me in my professional life. I Okay. can say it like that, right? I can't put anything above RCOP and its classes and my mentors over anything in my professional life, because उस जर्नी का जो है बहुत बड़ा प्रोडक्ट आज मैं अपनी खुद की सीवी में देखता हूँ. सही है. आई हैव लाइक 20 प्लस पब्लिकेशंस, आई हैव इनफ कनेक्शंस, आई हैव अमेजिंग मेंटर्स टू रिलाई ऑन, एंड एक्सपीरियंस तो इज अमेजिंग, राइट? बट प्रोसेस ये था कि just in my first year, my biology teacher was friends with RCOP's founder, Dr. Shazib Khan. They were in the Okay. same school, I think. And he told me before I even joined med school कि भाई एक बंदा है शाजिब खान डाउ में, उससे जाके तुम बस चिपक जाओ. सही है. डाउ में उससे सीखना है Okay. तुम्हें जाके. मैं कहा सही है. फर्स्ट डे से डाउ में मैं उनको ढूंढना शुरू हो गया.
After a few weeks, I found him. I introduced myself. He's like, okay, fine, very good. बस खत्म. Mm-hmm. I think Okay. second year के अंदर Dr. Shazim and Dr. Kaniz, they founded RCOP and they held a few Mm-hmm. research workshops for students. I think me and my friend and a few others were the only few second or third years in those workshops. Mostly there were fourth years or fifth years, right? Because उनको सबसे ज़्यादा Mm. अकल होती है. First, second year में Yeah. तो हम लोग beach parties कर रहे थे ना, हम तो पढ़ ही नहीं रहे थे. Yeah. तो हम लोग Mm-hmm. बस थे, we सही. just went into the workshop, we like चलो कुछ सीख जाएंगे. And बस वो दिन और आज का दिन है. So from सही. there, just being in a nobody in those classes to publishing so much to building so many contacts and then also mentoring a few RCOP students as well. The journey has been Mm-hmm. great. And my journey is nothing. I have friends who were my juniors, now they're RCOP president and vice presidents, and they have 100 plus publications. I mean, they're legends Okay. from Karachi or perhaps from in Impressive. Pakistan. हाँ, कराची का मैं ओवरऑल सारे लोगों की प्रोफाइल्स देख रखा है एंड वहाँ पे जो रिसर्च का कल्चर है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कह लें कि Yeah, स्ट्रॉन्ग yeah. और प्रेवलेंट है, जबकि यहाँ पे पंजाब वाली तरफ या नॉर्दर्न पंजाब की तरफ आ जाए तो यहाँ पे उतना प्रेवलेंट नहीं है वाला कल्चर. हालांकि काम बहुत कर रहे हैं आरकॉप हम्म. की. अब ज्यादातर वर्कशॉप्स में तकरीबन सारे पाकिस्तान के लोग ही ऑनलाइन बैठे हुए होते हैं. हम्म. लाइक रिसेंटली अभी जो मेटा एनालिसिस वर्कशॉप हुई थी उसमें काफी लोग आई कुड सी. आई वाज जस्ट देयर या. टू टू टॉक टू गिव अ टॉक एज सही. वेल जस्ट लाइक दिस. तो उसी में जो है वो काफी पंजाब के, लाहौर, इस्लामाबाद, इनफैक्ट पेशावर वगैरह के जो है वो लोग भी बैठे हुए थे. इनफैक्ट नाउ द फाउंडर्स ऑफ आरकॉप, डॉक्टर शाजिम एंड डॉक्टर कनीज, they have started another organization called Medical Education Council of Pakistan. So I ओके. have been honored to be a part of that, and I'm an instructor there. And what we are trying to ओके. do at MedCop is what RCOP did with research, we're going to do with medical education. So दैट्स MedCop के रियली साथ हम इम्प्रेसिव लोग क्या यार. करें? Yeah, हम्म. MedCop के साथ हम लोग ये कर रहे हैं कि we're going to start courses. Right now we have a course going on for biostatistics, social sciences, and हम्म. psychiatry, जिसमें हम लोग जो है हम्म. पेशेंट एथिक्स, बायोस्टेटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत लेसर नोन सब्जेक्ट्स है. इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ वी विल बी स्टार्टिंग अ कोर्स इन कार्डियोलॉजी. सो वी आर जस्ट ओके. ट्राइंग टू revolutionize or regenerate medical education. We think it's not being pursued properly by medical schools these days. So चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. thank you. Okay, so can you please share के how to prepare the residency application, जो उसका process है, उसकी residency application कैसे prepare करनी है, including the personal statement वाला part and how to get strong letter of recommendations for that. So if someone who is listening to this podcast and wants to go for the 2024 residency match, this is the right time to Mm-hmm. start. So by March Okay. or perhaps by April, May, you should have taken your step 1 and step 2. Probably OET अगर नहीं लिया तो OET is the Occupational English Language Testing examination, which is required Mm-hmm. for the ECFMG pathway application and the ECFMG pathway approval. तो आपका step 1 Mm-hmm. step 2 OET जो है maximum जून जुलाई तक हो जाना चाहिए. इससे लेट होगा Mm-hmm. थोड़ा फंस जाओगे. It's a very harsh year for you if you're in the match. So after having to take those exams and getting ECFMG approved, there are two things that you need to do. You need to prepare your CV and you need to prepare your personal statement. Mm-hmm. इन जून ईरास इलेक्ट्रॉनिक रेजिडेंसी एप्लीकेशन सिस्टम का टोकन मिलता है जून में. और वो टोकन खरीदने Yeah. के बाद आप ईरास पोर्टल पे जो है अपना पूरा पोर्टफोलियो बना सकते हो, जिसमें आपकी पर्सनल Okay. स्टेटमेंट जाती है, सीवी जाती है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जाते हैं, स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जाती हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. Mm-hmm. और फिर आप अप्लाई करते हो सितंबर में उसके सही. थ्रू टू द प्रोग्राम्स. पर्सनल स्टेटमेंट का मैं थोड़ा सा एक रिव्यू दे देता हूँ कि भाई अकॉर्डिंग टू मी देयर आर टू Mm-hmm. वेज वन कैन कंस्ट्रक्ट अ पर्सनल स्टेटमेंट. One of those ways Okay. is a more clinical, more conventional form. I would like to call it as a more robotic form कि हाँ भाई आपने ये चीज जो बताई है आपको सीनियर्स ने, या जो लिखी लिखाई बातें बस वो कर दी हैं और आपने सही. अपने आप को जो है एक पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया. I Mm-hmm. believe representing yourself on a paper is not that important as much as relating to the reader is important. So the other way of Okay. writing the personal statement is writing it in a narrative form that you put your Mm-hmm. heart and soul onto that paper, right? सिर्फ represent नहीं Mm-hmm. करना है, मार्केट भी करना है. सही. सामने वाले को Mm-hmm. आपकी पर्सनल स्टेटमेंट के साथ मोहब्बत हो जानी चाहिए. इतना अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट Mm-hmm. होनी चाहिए आपकी. नैरेटिव राइटिंग अच्छी जरूरी होनी चाहिए. So there are 5 Mm-hmm. paragraphs. First paragraph you start with a rhetoric or some sort of philosophy that you believe in, and then you start off Mm-hmm. in the second paragraph with why did you choose medicine, and then why are you going for this particular specialty. You might as well give Yeah. an incident of a patient that you may have encountered in that specialty. The third paragraph can Mm-hmm. just be a continuation of that, or perhaps it can relate to any sort of other incident, very important personality developing or life changing incident that you may have occurred, that you may have encountered in your life, which should come in the third paragraph. The fourth paragraph should be
everything and anything about a hobby or a personal skill of yours which you're bringing to the program, because the program does not Okay. care if you have 260s and 270s. The program cares whether you'll be a good fit in that program, right? So that fourth paragraph सही. should be something about your hobby or something that you will bring, which is novel to that program. And then the fifth paragraph Okay. could just be a conclusion and the ending of the tie back of the entire personal statement, where you're just like, summarizing everything and it's giving promises. Yeah, I will do this and that if I'm at your program. So it's a mixture of marketing and representing and whatnot. So yeah. सही. That's cool. So डॉक्टर शायन, मैं थोड़ा सा इस जगह पे कंफ्यूज था कि व्हाट आई नो के इज़ के जो न्यूरोलॉजी है इट इज़ अ सब स्पेशलिटी ऑफ मेडिसिन, तो इसको एज अ फेलोशिप प्रोग्राम क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया गया राइट आफ्टर इंटरनल मेडिसिन? इसको अलग से रेजिडेंसी प्रोग्राम क्यों है इसका? So that is the case in Pakistan or हम्म. in other countries as well, India, वगैरह. But in America, mein, in fact, even in Europe or United Kingdom or Australia, neurology is not हम्म. considered as a subspecialty. It is considered as an ओके. advanced specialty. So there's a difference between हम्म. subspecialty and advanced specialty. So I'll just draw a हम्म. comparison. पाकिस्तान में क्या होता है भैया, आप इंटरनल मेडिसिन का FCPS देते हो, आप 2 साल मेडिसिन करते हो, फिर आप IMM देते हो, IMM के बाद जो है न्यूरोलॉजी परसू करते हो 3 साल के लिए. या. सो 5 साल का हम्म. प्रोग्राम रहता है, राइट? या. Especially in US, I will comment on that because I don't know much about other countries as well. हम्म. So in US, what happens is that you do 1 year of internal medicine, right? And then you ओके. do 3 years in neurology. So normally हम्म. an internal medicine candidate will do a 3 years of residency. A neurology candidate will ओके. do a 4 years of residency. So उसमें medicine भी covered ओके. है and neurology भी covered है. It's not a subspecialty there, it's an advanced specialty there. फेलोशिप जो है न्यूरोलॉजी ओके. के बाद आप करते हो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ न्यूरोलॉजी में, जैसे कि हम्म. एपिलेप्सी हो गया, स्ट्रोक हो गया, न्यूरोक्रिटिकल केयर हो गया, स्लीप हो गया, सही. न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो गया, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो गया, इस तरीके से. सही. ठीक हो गया. So, Dr. Shayan, now I would like to come towards the financial aspect of the USMLE, and I would like to know कि how did you manage the financial aspect of the entire residency का process जितना भी था, and what advice would you like to give to the students who are facing similar financial challenges, particularly these days जहाँ पे जो रिपी है वो continuously depreciate कर रहा है and the journey is कह लें कि वो emotionally draining के साथ साथ financially draining भी होती चली आ रही है. यार हाँ, I wouldn't like, it's a 12 to $15,000 minimum journey now, हम्म. and that's a हम्म. lot of money. And I हम्म. wouldn't say that I managed it because I'm still under debt. And when I'm going to be Okay. starting my residency, I'll have to pay back that debt. But वो सब हो जाएगा, because हम्म. a resident earns at least 55 to $60,000 every year. That's a Yeah. lot of money, and you can easily pay off all the debt that is possible that you can get in, like, let's say 1 or 1.5 years installments. So Okay. financially, yeah, it was very draining, Ali, and was दुआओं से हो गया जो भी हुआ. But चलो, let's get into the objective part of it. So from Mhm. first day of med school, I was teaching, I was earning Mhm. money. I distinctly Mhm. remember मेरा पहला दिन था डाउ का, और Mhm. उस दिन मेरी फर्स्ट डिबेटिंग जॉब का फर्स्ट डे था. Okay. मैंने बोला, मैं अगर पहले दिन डाउ की 2 क्लासेस मिस कर दूंगा, मेरा इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी पहली डिबेटिंग जॉब की फर्स्ट क्लास मिस कर दूंगा, मेरे हाथ से जॉब चली जाएगी. वो जॉब 7,500 Yeah. रुपए की थी. चली जाती तो उस Okay. वक्त शायद मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता. बट आई चोज दैट. नॉर्मली फॉर मेडिकल Mhm. स्टूडेंट्स इट्स ओवरवेलमिंग टू गो टू अ यूनिवर्सिटी, एंड पहली क्लास कौन मिस करता है यार अपने मेड स्कूल की. बट आई मिस Mhm. दैट. आई लाइक, नहीं यार, ये मुझे पता है कि उससे इतना नहीं फर्क पड़ेगा. सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, ठीक है. Mhm. तो I was teaching, I was earning money from first day. Even before I had joined med school, I knew that this is the Okay. way to go about it. I was Mhm. investing in foreign exchange since then. I knew if I have to go to the United States, मैं हर साल अगर कुछ भी पैसे कमा के डॉलर्स में कन्वर्ट कर लूं, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा. क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ मेड स्कूल से लेकर आज तक जितना डॉलर ऊपर गया ना, मैं बता नहीं सकता, कि सब कुछ खत्म हो सही. जाता मेरे लिए. सही है. तो Mhm. तो फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट करा जाए, सही है. एंड एज सून एज यू टेक योर स्टेप्स, find students who you can teach USMLE to. That's my biggest advice. Okay. Why? Because Mhm. those students will probably be international students, and if they're American students or perhaps other students, you can easily earn in dollars, because it's important to now Mhm. start earning in dollars. The issue with Yeah. us as a country is that we are too proud to accept that we are damned, right? Mm. So Yeah. if we want to change anything for just our own selves or our own families, we need to figure out ways, financial ways, to Mhm. foster ourselves. So I'm not proud Yeah. or I'm not happy that this is happening to our country. मुझे बहुत दुख होता है. Mhm. सही है. My Yeah. heart bleeds tears of blood. But
Hmm. What can I do? Right? Yeah. What can I do? Can I do anything? जब रात में 12 Yeah. बजे कोर्ट्स खुल के एक इम्पीच हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते इस मुल्क का ना। Yeah. तो आप क्या कर सकते हो? Exactly. आप वोट दे सकते हो। आप जब रोड पे कोई निकले तो आप सच्ची हक की बात कर सकते हो, बट अपने आप को तो सेवर करोगे ना। तो स्टार्ट अर्निंग इन Hmm. डॉलर्स। फॉर मी Say. टीचिंग वाज that profession, that alternative profession that I would create. I've been a teacher for the past 8 years. I've taught everything: physics, chemistry, biology, Pakistan studies, Islamia. I'm talking about O and A levels, and then public speaking was my saving grace. It pays well. It takes less time, less energy. Okay. And then uske baad, I found this organization when I was doing my house job, and I had almost given up pursuing the residency route because tab tak mera step one ho chuka tha. But I also managed to save up some money for step two, but I did not have $10,000 for residency application. So I found this Hmm. organization through a friend of mine, which is called Valedictorian MD. I am very Hmm. proud that I signed up with them. So what this Hmm. organization does is that they provide interest-free loans to residency applicants who score well, Okay. and they have a certain criteria. And Hmm. once they give you that interest free loan, you can easily return that loan. If you do an additional waiver once you are on a J1 visa in the United States. थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा Okay. टेक्निकल है ये बात कि जब Hmm. आप अमेरिका पहुंच जाते हो तो कौन से वीजा पे जाते हो, एंड देन क्या होता है वेवर। ये बहुत एक Yeah. तवील टॉपिक है, बट Hmm. मुझे ये बहुत फायदा हुआ। आई साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम। मुझे बस कुछ नहीं Hmm. करना है। व्हेन माय रेजिडेंसी स्टार्ट्स आई विल बी रिटर्निंग one installment every month to them. And at the end of my Okay. 4 years, my debt has been paid. And after that, I can easily pursue a fellowship. I, they also recruit the doctors that they have invested in later on in life in the United States. They give them jobs as well as a Okay. consultant. बस फर्क ये होता है कि because they have given you money, so they will be choosing the place of their practice for the doctors. तो Okay. मैं सबको ये Okay. कहूंगा कि जो भी नए स्टूडेंट्स इसको परसू करना चाह रहे हैं, they can talk to me about this. You need to make an Hmm. informed decision. You need to review the contract properly. I got those contracts reviewed by my lawyer. I have some experience with law as well, so I did that myself as well. Okay. तो बहुत Hmm. मेहनत करनी पड़ती है। कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करने के बजाय सही तरह पढ़े बगैर प्लीज मत साइन कीजिएगा। बट फॉर Hmm. मी सो फार सो गुड। So now I would like to know, okay, what are some of the common mistakes that doctors generally do while they are going through the entire residency application process, and what are some of the ways to avoid those mistakes? So the most common mistake that new applicants may do is not talk to the people who have done this process. सबसे Okay. इम्पोर्टेंट मिस्टेक है, क्योंकि इसमें ना कुछ चीजें बड़ी बहुत छोटी छोटी नेटिक्रिटीज है। इरास Hmm. वैसे तो बहुत ही इट्स अ वेरी इजी सॉफ्टवेयर टू टेन टू एंड नेचुरली, Hmm. लाइक इस लेवल पे आके एवरीवनस डिसेंट इनफ इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी कि उनको कोई इतना Hmm. इशू नहीं होता। बट Yeah. आप अपने सीनियर से बात करें, अपने एलुमनस से बात करें, इसका रीजन ये है कि दो तीन चीजें हैं। मैं जैसे एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ, राइट? कि Yeah. व्हेन आई वाज कंस्ट्रक्टिंग माय सीवी ऑन द इरास, Hmm. there is an option where you can put on your work experience. So many people put on their work experience as an elective student in Falana Falana University. Many people put up that I was doing an observership or an externship or whatnot. Now Hmm. I put visiting medical graduate. Okay. So plausible deniability एक चीज होती है, Hmm. सही है। ये एम्बिग्विटी जो है ना, ये आपको काफी दफा हेल्प कर जाती है। अब कैसे बताता हूँ? Okay. अगर आप ऑब्जर्वरशिप लगाओगे, ठीक है, Hmm. तो एक एक प्रोग्राम डायरेक्टर या एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जब आपका सीवी पढ़ रहा होगा तो वो कहेगा यार इसका तो कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है ही नहीं, Hmm. तो वो आपको उधर शायद फिल्टर कर दे। अगर Yeah. आप इलेक्टिव लगाओगे तो चलो फिर सही है, एक्सटेंशिप लगाओगे तो फिर सही है। वो उसके बाद भी अगर आपने इलेक्टिव और एक्सटेंशिप अपनी ग्रेजुएशन डेट के बाद लगाया हुआ तो लगा यार ग्रेजुएशन डेट के बाद कैसे एक्सटेंशिप और इलेक्टिव कर सकता है, वो तो अलाउड ही नहीं है। समझ Yeah. रहे हो बात को? हाँ मैंने जी. लिखा विजिटिंग मेडिकल ग्रेजुएट leaves that part ambiguous. Why? Yeah. Because a senior told me about this, right? कि ये करो, Hmm. और मैं तो सबको ही कहता सही. हूँ करो। I know that this सही. may leave room for questions during the interview, but Hmm. that is an issue of tomorrow. अगर कोई Yeah. जैसे मुझे इंटरव्यूज में मुझे याद है, दो इंटरव्यूज ने मुझसे पूछा था अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कि व्हाट इज Hmm. विजिटिंग मेडिकल ग्रेजुएट, इज इट ऑब्जर्वरशिप, इज इट इलेक्टिव, इज इट दैट, इज इट दिस? But in the interview I had already prepared the answers, and there is a better chance of explaining it in the interview instead Hmm. of putting a particular terminology before that. So these are the kinds of सही. mistakes that people do, right?
इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है ड्यूरिंग एप्लीकेशन दैट पीपल डोंट रीड द वेबसाइट्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स. दे जस्ट सेलेक्ट प्रोग्राम्स ऑन ईरास. मत करो. रेजिडेंसी एक्सप्लोरर पर जाओ, अपनी खुद की लिस्ट बनाओ. आपके सीनियर की लिस्ट को ओके. अंधे होके मत फॉलो करो, अपनी खुद की लिस्ट बनाओ. खुद से देखो कि भाई सही. ये प्रोग्राम में ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, ये चीज आपके काम की चीज नहीं है. काफी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहां पे मैंने अप्लाई ही नहीं किया, इवन दो आई हैड ओके. स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इन दोस प्रोग्राम्स. Why? Because I talked to my seniors, my mentors from that program who had graduated, and I asked them, इस प्रोग्राम का स्कोर फिल्टर ये है वो है. एक प्रोग्राम था जहां पर मैं जानता हूँ कि आप मुझे आराम से इंटरव्यू मिल जाता बिकॉज आई हैड सच अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट. बट बिकॉज द स्कोर फिल्टर वाज 250, व्हाई शुड आई अप्लाई? आई डोंट हैव अ 250. आई शुड नो ओके. व्हाट टू डू, राइट? तो पैसे बचाना जरूरी होता है. कम सही. प्रोग्राम्स अप्लाई करोगे, पैसे बचाओगे. इसके अलावा सही. दो चीजें और. लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन. One should know what letters of recommendation to assign to what programs. I had applied to neurology and internal medicine both. If I ओके. were allotting letters of recommendation of internal medicine to the programs of neurology, that would have hurt my case. Because neurology के ओके. या. programs को ये नहीं पसंद कि neurology as a backup कोई apply करे. तो अगर मेरे LOR में लिखा होता है internal medicine में किए तो बहुत बुरा हो जाता मेरे लिए. तो ये है. हाँ. और हाँ बस I think that's it. Sahi. Thank you so much for sharing these amazing tips. Like these are like some really worthwhile points जो कि obviously कोई बहुत सारे लोग share नहीं कर पाते और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कहने की difficulty होती है इसको process Yeah. करने में. So now I would like to know कि can you please share any memorable experience or encounters that you had during your journey to the neurology residency? Yeah, there have been a lot, but I Okay. think if there's one experience which was memorable, was the time that I spent in the United States with those doctors and with those people who जिनके घरों पे मैं रह रहा था. Because Mm-hmm. मेरे लिए professional achievements या academic achievements या even monetary achievements जो है memory नहीं बनती. मेमोरी Okay. वही बनती है जो अमिगडाला को स्टिमुलेट करे. तो Yeah. वो मेमोरी जो है वो इमोशनली होती है. So Mm-hmm. I am that way very emotional and very subjective about it. So the Sahi. memories that I created with those people, I found an exceptional mentor in my preceptor in Phoenix. I think if I want to be something in the next 25 years, I want to be Dr. Qureshi. So yeah, that's my Okay. goal कि मुझे बस उनकी जैसा बनना है, उनकी जैसा न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, Mm-hmm. उनकी जैसा इंसान बनना है. तो मेरे लिए तो ये Sahi. पॉइंट है. तो यार those were the best memories during those times. Sahi. Dr. Shah, now I would like to conclude the discussion. Just one last question, like what would be your last piece of advice for all other IMGs who are planning to pursue a career in medicine, particularly in the United States? तीन है. बहुत Okay. क्लीशे भी हैं और थोड़े से हार्श भी हैं. एक तो ये, Mm-hmm. डोंट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग, Mm-hmm. डोंट शाई अवे फ्रॉम रिक्वेस्टिंग, डोंट Okay. शाई अवे फ्रॉम मैसेजिंग समवन. ज्यादा Mm-hmm. ज्यादा क्या होगा? जलील होगे ना. Yeah. खैर, Mm-hmm. वैसे क्या हो रहा है? आप जब पढ़ाई कर रहे हो, आप जब बहुत ही कम पैसों में रेजिडेंसी स्पॉट ढूंढ रहे हो, तो आप जलील हो रहे हो. You will Mm-hmm. get disrespected, that's fine. Someone might not Yeah. respond to you, that's fine. वो Mm-hmm. उनका प्रोगेटिव है. डोंट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग फॉर हेल्प. सही है. दूसरी चीज, यार नेवर क्विट. Never beat yourself about that. Oh my God, this guy has a 270, or this guy has so many research publications, or this person or this girl has an exceptional CGPA. Oh my God, Mm-hmm. uski clinical skills dekho. It doesn't matter. You are your own Yeah. person. If someone's going to Mm-hmm. select you for a residency spot, they will select you for what you are, not for Yeah. what you have accumulated and observed from other people. Right? So Mm-hmm. create your own original self. You need to have that Sahi. original narrative written on the person statement. और वो दिखना भी चाहिए आपकी इंटरव्यूज में. ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ Sahi. आपने लिख दिया बिकॉज आप अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हो, अंग्रेजी अच्छी लिख लेते हो और आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे. तो नेवर Yeah. क्विट. नेवर केयर अबाउट व्हाट अदर्स आर सेइंग अबाउट यू. नेवर केयर अबाउट व्हाट एनीवन, इवन योर ओन फैमिली सेज अबाउट यू. सही है. मेरा ये Mm-hmm. मानना है. Mm-hmm. थोड़ा सा लाइफ को लेकर थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक अप्रोच है, मैं मानता हूँ, मुझे बहुत लोग कहते हैं. बट इट डजंट मैटर टू Sahi. मी बिकॉज इट वर्क्स फॉर मी, Mm-hmm. राइट. हाँ. Mm-hmm. डोंट ऑब्वियसली नीडलेस टू से पॉजिटिव फीडबैक को कभी भी वापस मत जाने दो. कोई तुम्हें पॉजिटिवली Mm-hmm. क्रिटिसाइज कर रहा है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे अम्मा अब्बा है, तुम्हारे भाई बहन है, उनकी बात सुनो. तुम्हारा मेंटोर है, वो तुम्हारे Yeah. भले के लिए कह रहा है. पॉजिटिव Mm-hmm. फीडबैक को हमेशा वेलकम करो, बट करो अपनी. Sahi. और तीसरी चीज, Mm-hmm. डोंट स्लीप. ज्यादा सोओगे कुछ नहीं कर सकते. Okay. Sahi. कुछ नहीं कर सकते. Sahi. नहीं, ये 24 आवर्स आर नॉट इनफ. उसमें Mm-hmm. 8 घंटे आप सो जाओगे तो कैसे चलेगा? हो ही नहीं सकता. मैनेज ही Mm-hmm. नहीं कर सकते. Okay, Sahi. Now I would like to end the discussion and thank you so much, Dr. Shayan, for sharing all these valuable insights with us. It was an amazing session, and
I am pretty sure that people will get some real value out of it, inshallah. Thank you very much, Ali, for inviting me on your platform. I hope this platform fosters and more people get enough information and knowledge from your platform. You seem like an exceptional person, and I hope कि आगे जाके आपको किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो I'm always available. Chale. You're doing Thank an you so much. exceptional job. Thank Revolutionized. you so Thank you. much. Thank you so much. Thank you so much to all the viewers who have watched the episode till the very end. Join us next time for more exciting conversations. Until next time, Allah Hafiz.